It is my privilege to welcome you all to this significant event, the 8th UN Global Road Safety our SP traffic sir, all traffic wardens, my colleague officers, media workers and friends. I would like to request our PI Brandon to present a bouquet of flowers to our respected DGP sir. I would request PI Malvar to welcome our director of transport sir with a bouquet of flowers. I would request to welcome the Robert Martin sir with a bouquet of flowers. I would request Chairman now to present bouquet of flowers to our SP officer. The valuable contribution of our traffic wardens who have been working tirelessly to promote road safety in their community. These dedicated individuals have been instrumental in spreading awareness, encouraging responsible driving behavior, and supporting our traffic police. I would request our ESP traffic sir to say a few words on this occasion. आज आम्ही सगळे मिळाला की ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हो आम्ही मनयतात आणि तो 12 तारखेच्यान सुरू जाला 14 तारखेक सोंपता. ह्या ओकेजनाचेर जे आमचे आसा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, गोवा पुलीस आणि गोवा गॅस म्हणून आम्ही केल्ले ते आमचे रिस्पेक्टेड ट्रॅफिक वॉर्डन जातात ते आमच्या सिटान काम करतात ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून. तांची एक अवेरनेस प्रोग्राम लोकांचे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनायज करतो. सो ह्या निमित्तान हांव आमच्या ऑनरेबल DGP सरांना DGP सर आपल्या आपल्या कन्सर्न दिल्या रोड सेफ्टी DGP सरांनी म्हणाले की रोड सेफ्टी एनी टाइम टू स्टँड. ऑल्दो सरांका 2-3 मिटींग आसा सरांना रोड सेफ्टी फर्स्ट. थँक्यू सर. आणि ते तयार झाले आणि नेक्स्ट आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ट्रेनिंग सुद्धा असतात आणि या प्रोग्रामात येवपाक कन्सर्न दिलें. प्रोग्राम प्रमाणे आमी सगळे आसा. सो परत एकदा तुमकां वेलकम. सो ट्रॅफिक वॉर्डन्स म्हणजे कितें? सो ट्रॅफिक वॉर्डन्स तुमी सगळ्यांनी आपल्या इंडिविज्युअल कन्सर्न दिला, फॉर्म तुमी भरून दिला आणि आमचे थोडे ट्रॅफिक वॉर्डन्स जे आसा ते विद्यार्थी जाल्यार पयलींच्यान काम करतात ट्रॅफिकाक. ट्रॅफिक वॉर्डन हे तांच्या साठी तुमी आमकां एसिस्ट करपाचें आसा ट्रॅफिक वॉर्डनाचो वॉलंटियरी जो आनी हांव चड उलयना तेच्या मनाची आमचे DGP सर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट उलोवपाचे आसा. सो हांव शॉर्ट सांगता की ट्रॅफिक वॉर्डन हो 18 इयर्स एबाव हो आनी फॉर्म करून दितकच आनी ते कन्सेंट मेळटकच तांच्यान PI ट्रॅफिक इन्चार्ज आमकां रिकमेंडेशन धाडटात आनी दिवाळेची स्क्रुटिनायज करता. तुमकांय करपा म्हणून सांगता. पुलीस स्टेशनार इवन आमी व्हेरीफाय करता की तांचे कसलो क्रिमिनल रिपोर्ट ना. मागीर रिकमेंडेशन येता येता एसपी ट्रॅफिक वॉर्डन सँक्शन करता. मागीर ताका ते ट्रॅफिक वॉर्डन ऑलरेडी तुमकां कार्ड इशू जाता. आनी ट्रॅफिक वॉर्डन कितें आमी पॅकेज तुमी सर वॉर्डन तुमी येता तुमचे तुमकां आतां ट्रॅडिशनल पॅकेज मेळटली ती फिल्डांत तुमी घालपाची. ट्रॅफिक वॉर्डन बेसीक एनरोल करपाचें ताजे फाटल्यान इफेक्टीव ट्रॅफिक रेग्युलेशन तुमी आमकां एसिस्ट करतले. तुमी ट्रॅफिक वॉर्डन आनी ट्रॅफिक पुलीस गोवा पुलीस पुलीस आसा. सो ट्रॅफिक वॉर्डन केन्ना एक तुमी पयलीं सांगता तुमी मिनिमम 3 hours पीक अवर्साक तुमी तुमकां टायम मेळटा तो काम करपाचें आसा.
ते मागीर ट्रॅफिक इतक्या जाता आनी तुमकां सांगता जाल्यार मोठे मोठे बंदोबस्त जाता हांव स्कूल आनी कडेन करपाचें ऑलरेडी आमच्या ट्रॅफिक वॉर्डान आपआपल्या एरियेक काम करता स्कुला कडेन बी सर आमचे पुराय वे आर अनरोल्ड 87 सिटीजन ट्रॅफिक वॉर्डन उसके सर आज ट्रॅफिक वॉर्डन रेगुलर सर्विस देते तुमको आपल्या आजच्या परिस्थितीचे होता आणि दुसरे सांगपाचें म्हणजे तुमच्या तुम्ही ट्रॅफिक वायलेशन नोट करपा जाता ती वायलेशन तुम्ही ट्रॅफिक इन्क्वायरी दिवपा जाय तुमकां रिक्वेस्ट करता की ती फेर आसपा जाय म्हणजे इंडिविज्युअल कितें आसली जाली वेरी जेन्युइन त्या वायलेशन आसा ती कॅप्चर करून आमच्या पीआय दिवपा जाय तुमकां करपा लागून सांगता की तुम्ही जेन्ना ड्युटी करता तेन्ना तुमचें काम आसा ट्रॅफिक सेलाक पेशंट डायरी म्हूण आसता थंय वचून सांगून तुम्ही मागीर ट्रॅफिक ड्युटी दिवपा जाय ती पयली जावं तुम्ही त्यावेळेस मोस्टली स्कुला कडेन एक्सपेक्ट करता बीग बंदोबस्त सगळे जात्रा आतां इव्हेंट आसता क्रिसमस कार्निवाल क्रिसमस न्यू इयर आनी आमोले तुला एनीथींग म्हणजे ट्रॅफिक ऑफिसर इन्चार्जान तुका ती सांगपाचें तुमी ड्युटी परफॉर्म करपाचें आसा तुमकां मेळ्ळें जाल्यार आनी दुसरे म्हळ्यार तुमी एक्सिडेंट विक्टीम्स आसता तांकां एसिस्ट करपाक तुम्ही ट्रॅफिक अवेरनेस तुम्ही प्रमोट करता जाल्यार फ्रॉम युअर फॅमिली फ्रेंड्स जे आसा आनी इन द कम्युनिटी तुम्ही ट्रॅफिक पुलिसा बरोबर तुम्ही ही एक्टिविटीज प्रमोट करता जाय आनी हाजो एकच उद्देश आसा आनी आमचो ऑनरेबल डिप्युटी जनरल चार्ज घेता फर्स्ट एसपी हांव मेळ्ळा ट्रॅफिक आनी आय वॉन्ट टू वेलकम ऑल्सो डिप्युटी सर से प्रायोरिटी इज टू रिड्यूस एक्सिडेंट एंड फैटेलिटीज इन गोवा एनफोर्समेंट एलिमेंट ना पण ट्रॅफिक अवेरनेस आणि फॅटेलिटी रिड्यूस जावपाक आनी त्यो रिड्यूस करता जाल्यार गोवा ट्रॅफिक पुलीस गोवा पुलीस आणि ट्रॅफिक वॉर्डन अदर एनजीओ मेळून आमी सगळ्यांनी सिन्सियर एफर्ट्स करता ओनली टू रिड्यूस फॅटेलिटीज आणि एक्सिडेंट आणि ताका लागून म्हाका जाल्यार दिसता अवेरनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि नॉट ओनली रोड सेफ्टी वी नियरली एवरी डे इज द रोड सेफ्टी डे अशें म्हाका जाल्यार दिसता सो माय कन्सर्न आयसी नाव आणि ट्रॅफिक वॉर्डन हांव रिक्वेस्ट करता की ट्रॅफिक अवेरनेस आमी सगळ्या इवन विलेज थाना प्रोग्राम सुद्धा ते पावपाक जाय ताचे बरोबर सरकारच्यान इंडियाच्या लेवल रोड एक्सिडेंट हे रिड्यूस जावपाक फॅटेलिटीज रिड्यूस जावपाक सो हांव इतकें सांगून म्युनिसिपल कंपनीला आनी परत तुमकां गोवा ट्रॅफिक पुलीस हांवें तुमकां वेलकम करता also welcome honorable deputy sir, director of transport, Goa and Commissioner. Thank you. I would now like to request director of transport to say a few words. I'm extremely delighted to be a part of this program because I strongly believe that road safety is a collective responsibility of government as well as the community. And today we see this traffic warden scheme launched by the traffic police. And to see so many volunteers being present here for this program, it's a very delightful thing. I would like to congratulate all the people who have applied for the traffic warden scheme. And I also want to congratulate the traffic police for taking up this global initiative and to involve community in terms of road safety. So with that, while I said it is collective responsibility of government and community, within the government also, there is lot of need for coordination across multiple departments. Because road safety is not contained in one particular department. There is transport department involved in that. There is traffic police involved in that, and there are all engineering departments and health department together have to work hand in hand to ensure better road safety in the state of Goa. So I think the biggest summary that we can, the more detailed summary that we can give you in terms of what measures we are taking collectively to improve the road safety, that measures can be found in the recently notified Goa Road Safety Policy 2020. So we have done a very comprehensive review of all the aspects of road safety, and the government has recently notified this policy, which is now available in the official government gazette, which outlines in a very comprehensive way what are the measures that the government is trying to take to improve the road safety.
So, in my view, in comparison to the earlier policies, what is the major change or shift in the new policy? The major change in the new policy is with respect to the emphasis that is being given to use technology to improve road safety. Like for example, today we certify a vehicle and say that it is roadworthy. So most of the certifications today happen manually. But in the new road safety policy, we have envisaged that such certification should be completely automated and there should not be any kind of human intervention in determining whether a vehicle is fit to be driven or not. Similarly, in terms of detecting the road violations, the road safety policy speaks about using intelligent traffic management systems so that camera-based detection of violations can be implemented in the state of Goa. I am very glad to mention to you that in both these instances, already some action has been taken. For example, the Transport Department has given already permission to set up 2 automated testing stations in the state of Goa, and we have also received the 3rd application for setting up of automated testing stations. And parallelly, the PWD Department has already taken initiative to implement the artificial intelligence-based traffic management system in the state of Goa. In addition to it, we are also requesting the Ministry of Road Transport to give some special grants to the state of Goa for setting up of a scientific driver training center in the state of Goa, so that even the aspect of driver training can be computerized, can be automated, eliminating any kind of human interference and thereby enhancing road safety in the overall state of Goa. So those are briefly the measures that we are taking, and I once again want to congratulate Traffic Police for this noble initiative. As the Director Transport and as well as the Member Secretary of State Road Safety Council, I want to assure SP Traffic that our full support is there for this program, and we will continue to support whatever initiatives Traffic Police has been taking. In the past also, when Traffic Police have taken the program of trust for driver literature training, we have given our full support, and once again on this stage, I want to give you that assurance that we will all work together as a team, and the Transport Department will fully support this kind of initiatives of traffic. Thank you very much for this opportunity. I wish all the best to the traffic wardens, and I am very confident that this program will be a great success. Thank you. Goa Police would like to felicitate some of the traffic wardens with a total of appreciation for their outstanding service. So as I call out name, traffic wardens are requested to please come on the stage. At the hand of Honorable DGP Goa, Mr. Alex Sugar Rodriguez, Mr. Clive Garcia, Bhavna Raikar, Bharti Kanpondkar from Kanpona, Priya Pradeep Bedi, Kanpona,
Abbas Sheikh, Ishwari. Sitaram Kamal Baloi. Kartik Anggota, Kartik Anggota. Thank you, sir. I would now like to request our Goa convener, Mr. Roland Marti, to say a few words. The culmination of the efforts that have gone on in making this traffic model scheme a success. And I think when the Director General of Police comes here, graces the occasion and even hands over the appreciation certificate, it means a lot. Sir, our journey actually started in 2005. So under the Consumer Protection Act of then 1986, in February 2005, the first meeting of the subcommittee on road safety and traffic management was held in North and South Goa. And this gave us the impetus to start working first along with the traffic police and also the Directorate of Transport. Many of the volunteers who have become traffic wardens, they come from the local consumer forums. And after this journey of 2005, we then approached the Directorate of Transport and pointed out to them that this issue of road safety and traffic management, if it has to go forward, then we have to take the next step and organize some more activity in the state of Goa. As you know, every year we used to have the National Road Safety Week, which was to be held in January. And we found that our consumer forum, the education institution, they could not get involved. So in 2011, we proposed to the government of Goa that for the first time we should have the State Road Safety Week. And that was the second opportunity that traffic wardens and our volunteers also could get involved. And sir, I want to point out to you, they are not present here, but the first batch of traffic wardens who got involved, they came from a village island of Sharon. And today, of course, they had the opportunity to have the DGP present for the program. But they were giving 1.5 hour service on the ferry boats, both the ferry boats, because people were rushing to get onto the ferry boat. And after seeing that experience, we invited them to Delhi to promote the traffic water scheme. After that, our other volunteers got encouraged, and slowly we got more volunteers from the consumer forums to be traffic wardens. I also want to point out, if you look at the back of this booklet, sir, it is written that 2023. The earlier booklet, which was published, was in 2013. So this gives you the history that of also how the movement is picking up. And with this movement, sir, is the attached is the enrollment form. So now we have gone to the next step. The next step is forming the road safety and traffic management committees in every village panchayat and municipal council. And sir, I would like to bring to your notice that the State Road Safety Council has endorsed it. Honorable Minister, who is the chairperson of the council, I requested him, I said, see, now something is happening. Let us provide them financial assistance. And the minister was
time there is a road safety week to spend. Of course, the question is, everybody does not come forth and spend money. So तुमका भाव रस्त्याने आमचे गोंयांत एक सोयी आहा पैसे कोणी आसा जातले. But I want to tell all the traffic wardens, please तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत म्युनिसिपल काउन्सिल विजिट करा फुडल्या विकान तरी आणि रोड सेफ्टी अँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन केलेले आहा ऍक्टिव्ह जावना तुम्ही मातशे वचन सांगा किंवा आम्ही मेंबर जावं unless we integrate all these schemes because today the road safety committee in all the panchayats and municipalities there because there are 15 programs how to get involved and traffic warden is one of the scheme mentioned in this activity. Now very important today also the newspapers have carried yesterday we did a drive. So the drive of road safety has to go on to the next step where we have to involve our panchayats and municipal council. The public always when there is accident they will point out to 3 departments as the fault. One is PWD, second is Directorate of Transport and third is traffic police. But sir, this community engagement issue is very important and can move forward to the traffic warden. And today as some of the newspapers have carried the death of our young people sir, from between 18 to 14, that group of people needs to be reached out. Sir. And today I would request sir that you also take the lead that we have to take the traffic warden and community engagement to the next week. One is about responding at the time of accident. As you know, the first hour, golden hour is very important and therefore we have approached the Director of Health Services to conduct training program on rescuing the victim at the spot. So through the medical assistance and therefore the good Samaritan law now enforced, that is the first part. And the second important part is on the value of helmets. Sir, today there are fake helmets in the market and we require our traffic wardens to show to the public what is the original helmet and the fake helmet. So without taking any more time, I would like to thank Honorable DGP for being present here and I am sure that his presence here, our director who is the member secretary of the State Road Safety Council, two important dignitaries here present will take this movement way ahead. And I am sure तुमचे ट्रॅफिक वॉर्डनाचे मनान आसतले की बाबा आमचे रिन्यू करपा जाय पयशांचे एलोकेशन करपा जाय. म्हाजो रिक्वेस्ट आसा ट्रॅफिक वॉर्डनाक तुमचे रोड सेफ्टी कमिटीक मातशे जॉइन जायात. तुमी तेंचे कडेन पयशे ऑलरेडी आसा प्लस ऑफकोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट this money also will be available. But most important, please give your suggestions. आज आम्ही पंचायत म्युनिसिपालिटी दिसता हुई झिब्रा क्रॉसिंग जाय हुई स्पीड ब्रेकर जाय हुई साइन बोर्ड जाय तुम्ही ग्राम सभा करतात पळयात नो एप्लिकेशन जातली. So I would request the traffic wardens, please take interest. You give the proposal to the panchayat and municipal council in this regard. So and while concluding, I would just like to hand over two things at your hands, sir. One is the Good Samaritan poster and second is the word helmet. Now I would like to request our chief guest of today's function, Director General of Police Goa, to say a few words on this occasion. वार्डन को फेलिसिटेट करने के इस प्रोग्राम में स्वागत है. रोड सेफ्टी के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है. अफसोस की बात यह है कि आज हम लोग कितने जो लोग यहाँ फॉर्म में हैं ये सब 30, 40, 50 प्लस के लोग हैं तो रोड सेफ्टी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. एक्चुअली 30, 40 और 50 साल की उम्र में आपको रोड सेफ्टी की बात
बात 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक के बच्चों को करनी चाहिए। अगर उन्होंने सही तरीके से रोड सेफ्टी को समझ लिया तो 20 साल के बाद आपको रोड सेफ्टी की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इट इज आयरनिक कि हम लोग हर साल रोड सेफ्टी के बारे में हिंदुस्तान में इतनी बातें करते हैं, बातें करने की आवश्यकता होती है, और उसके बावजूद सालों साल से we are not able to make any progress, any dent in the fatalities which are happening on the roads in the country. हिंदुस्तान में हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोग रोड्स के ऊपर में they are killed. So roads have become killing machines. जो भी हम आवागमन के हमारे साधन है, ट्रांसपोर्ट के साधन है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट दे आर आल्सो किलिंग मशीन्स। इसके ऊपर में आपको रेडिकल और फंडामेंटल सोच में तब्दील करने की आवश्यकता है। 2 वजहों से आप कोई बीमार होता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती सर आप हॉस्पिटल जाओ, आपको अपने इलाज की आवश्यकता है। रोड सेफ्टी में हमें क्यों उनको कहना पड़ता है कि साहब आप रोड के ऊपर में सावधानी से चलो, आप अपने को बचा के चलो। गोवा के अंदर में every year we lose 30 lives, around 25 to 30 lives due to murder. But in road accidents we lose 350 people every year, 300 to 350. आप पिछले 20 साल का डेटा निकाल के देखो, 300 से 350 is the average we lose on roads of Goa every year. And as Roland Barthes said, 20 से 40 साल की जब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एट मैक्सिमम होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, एंड दैट इज अक्रॉस इंडिया। अगर आप कितने भी डेटा निकाल के देखोगे, मैक्सिमम लोग 20 से 40 एज ग्रुप में होते हैं। तो इसमें जो ये कहते हैं कि ये इसके ऊपर में हमें सोचने की जरूरत है कि आपने रोड सेफ्टी कहाँ से स्टार्ट करें। आपको स्कूल के अंदर में बच्चों को रोड पे जाने के समय में सही बिहेवियर की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता है। आप उनको प्राइमरी स्कूल में सिखाओ, सेकेंडरी आते आते बिना लाइसेंस लिए आप भेज देते हो बच्चों को स्कूल, स्कूली पे चला के जाते हैं। माइनर से कभी एक्सीडेंट हो जाता है, समटाइम्स he becomes perpetrator, sometimes he becomes victim. But what ये चीज समझने की जरूरत है कि फिर दूसरी बात क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मान लो रोड की इंजीनियरिंग खराब है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको लाइसेंस ऐसे ही मिल गया बिना किसी मेहनत के, बिना तरीके से चलाए हुए, ये बाहर के अब्रॉड में आप जाके अमेरिका में देखो, सिंगापुर में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, वहाँ एक्सीडेंट्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ लाइसेंस की कीमत लोगों को मालूम है, ड्राइविंग लाइसेंस कितनी मुश्किल से मिलता है, इतनी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं वहाँ पे। जब तक आप रोड की लैंग्वेज को समझ नहीं लेते हो, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, रोड की लैंग्वेज को मालूम कि कैसे उसको रोड पे जाने का मतलब क्या है, रोड से कैसे बिहेव करना है, पूरे रोड के साथ कैसे बिहेव करना है, एंड वी गेट लाइसेंस। मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, I am talking what is the fundamental shift which is required if we are going to make any meaningful progress in road safety. ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बताने के लिए, चलान के लिए करनी चाहिए। Behavior change is the most important change that we require on roads. शराब पी के गाड़ी चलाना, ये सबको कानून में शराब पी के अगर आप लेके चलाओगे तो या तो एक्सीडेंट करके कम करोगे या फिर और कम करोगे। ये होता इस वजह से है क्योंकि बिहेवियर शिफ्ट जो रिक्वायर्ड है इट नॉट टेकिंग प्लेस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को हम सही वक्त पे सही समय पे बताएं कि रोड पे आने के लिए क्या चीज करने की आवश्यकता है, किस बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है। जब तक ये सिर्फ नहीं होगा, एवरी ईयर वी विल बी टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड देयर विल बी हर साल फिगर्स वही रहेंगे। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, certitude of punishment and very punitive and deterrent punishment. जब तक वो आप नहीं करेंगे, ऐसा आप तो 800 पुलिस वाले ट्रैफिक, यहाँ पे 50 वाले ट्रैफिक वाले, तो 850 लोग गोवा की तो 1000
हजारों किलोमीटर रोड पर है, कैसे आप कवर करोगे? आप कितने पुलिस वाले लगा लो, आप नहीं कवर कर सकते। दैट इज आवर एक्सपीरियंस। इसीलिए जो बात ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ने कही है कि कैमरा बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोल्यूशन होना चाहिए। अगर वो सर्टिट्यूट ऑफ पनिशमेंट होगी कि आपने वायलेट किया और आपको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी। मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, वहाँ कहीं पे भी कोई ट्रैफिक वाला नहीं है और कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक का वायलेशन करता हुआ नहीं पाया जाता है, क्योंकि कैमरा हर जगह लगा हुआ है। आपने गलत कार्य की, आपके पास टिकट बोल दे, टिकट आ जाएगा, चालान आ जाएगा। एंड इट इज सो हेवी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले भी कभी दे डोंट अफोर्ड टू डू अ रॉन्ग पार्किंग और डू अ ट्रैफिक वायलेशन, क्योंकि वो इतना हेवी पनिशमेंट है। ये दो चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बाकी चीजों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड बोथ लाइक इन दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कम्युनिटी चाहे तो चेंज नहीं हो सकता है। वी कैन मेक ए चेंज। पिछले साल हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से टारगेट किया था कि हमें नेक्स्ट ईयर 2024 के मुकाबले 25 में 20% रिडक्शन फैटेलिटी का गोवा की सड़कों पे होना चाहिए। ओनली बाय द एफर्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस जो कर सकती है, बाकी एजेंसी जो कर रही है वो तो ओवर एंड अबव। एंड दिस ईयर ड्यू टू आवर कंसिस्टेंट स्टडीज एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, talking to community and doing pollution, so far we have been able to reduce it to 23% compared to last year for during first 4.5 months. अभी तक हम लोग 20% के टारगेट पे हैं। तो अगर कम्युनिटी के सारे सेगमेंट्स के अंदर में फैटेलिटी को कम करने का, रोड एक्सीडेंट कम करने का जज्बा हो, डिटरमिनेशन हो, तो इट इज डूएबल। तो लेट अस टेक दिस मैसेज टू एंटायर वर्ल्ड। आप यहाँ पे हैं, become brand ambassadors of road safety and tell people that road can save lives on roads. That is the determination that we need to show. मैं इस अवसर पे जितने भी ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि रोड सेफ्टी की इस मुहिम में आप कंटिन्यूसली ट्रैफिक पुलिस के साथ हैं, कैप्टन हैं। और मैं तो पर्सनली कुछ वार्डन को देखकर तो हमने सोशल मीडिया पोस्ट हाउ पैशनेट दे आर अबाउट रोड सेफ्टी। तो ये आप कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से आपका धन्यवाद। एंड लेट अस टेक सेफर रोड्स एज रियलिटी इन गोवा। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir, for your enlightening words and advice. We will follow it. Here I just want to make one small announcement that we are towards the conclusion of this program. However, after the refreshment, tea break, our traffic wardens will be having a workshop to attend. So please, after refreshment, please don't go away. We will be having a workshop on awareness for traffic wardens. I would like to express my sincere gratitude to our chief guest, Honorable DGP sir. देखिए, जितने भी फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर में हेलमेट का ना पहनना वो एक बहुत मेजर इश्यू है। दूसरा ड्रंक एंड ड्राइविंग भी एक मेजर इश्यू है। और ये दो चीज़ों पे भी अगर हम कर लें सही तरीके से, अगर लोग अपना व्यवहार बदल लें तो बहुत फर्क आता है। दिसता म्हत्वाचो प्रोग्राम जाला, कित्याक ग्लोबल रोड सेफ्टी विकान ट्रॅफिक वॉर्डनाची मिटींग घेवप, त्यांचे फेलिसिटेशन करप आनी ह्या स्किमीचेर फोकस हाडप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसलें आनी तें आतां जालें। आनी चड करून आयज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस DGP आयज प्रेजेंट आसलो। ही जी स्कीम आसा कितलेशे वर्सां गोवा कॅन ही स्कीम प्रमोट करता आनी तेंच्यान आमी जेन्ना रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन करची म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल घातलो आनी पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन स्थापन करपाचें हें फायनलायज जालें। तितून आमी क्लियरली एक पॉयंट घातलेलो आहा की ट्रॅफिक वॉर्डन स्कीम प्रमोट जावपाक जाय। आज जे 80-90 जर वॉर्डन आसा, म्हाका दिसता ते 200 पासून जावंक शकता। केन्ना जातलें तें, जेन्ना लोकांक खबर आहा ही स्कीम कसलो बेनिफीट आहा। आनी म्हाका दिसता हे जे वॉर्डन आसा न्हू ते खूब लेवलाचेर इनवॉल्व जावपाक जाता। एक म्हणजे ग्राम सभेन वचोन आपले कितें विशय जावं स्पीड ब्रेकर, झिब्रा क्रॉसिंग, सायनेज बोर्ड हे सगळे विशय घालपाक। दुसरे खूब कडेन आमचे शाळे मुखार सगळे हेडमास्टर प्रिंसिपल मागता एक कॉन्स्टेबल दी अशें तरेन। आनी जो आमचो बाब क्लायव म्हूण आसा ग्रासियस,
जो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसा तो डेली सकाळीं अर्दे वर तो टायम घेवन रोजरी स्कुला मुखार ते जंक्शनाचेर नावेली जो आपले वॉलंटरी टायम दिता. म्हाका दिसता हितून क्लियरली दाखोवन दिता हाव ट्रॅफिक वॉर्डन कॅन हेल्प. आयज मुद्दम आमी DGPच्या हातीन हेल्मेटाचो विशय आनी गूड समॅरिटन कायदो म्हणजे ह्या लेवलाचेर जर ट्रॅफिक वॉर्डन इनवॉल्व जर जावपाक जाता तिचे हेल्मेटाची कित्याक गरज आहा आनी बरी हेल्मेट कशी घेवची, फेक हेल्मेट घेवचे न्हू म्हणून. आनी दुसरें मेडिकल एसिस्टन्स टू द विक्टीम. आज खुबशे लोक जे एक्सिडंट जाता ते सर्वायव जावंक शकता पूण तांकां आदार ना आनी ते भितात कोण तरी म्हाका हॉस्पिटलांत व्हरता हांव त्रासान पडटलो. हें सगळें पटोवन सांगपाक लोक कमी आसा. म्हणजे कितें आसा ते फक्त जबाबदारी ट्रॅफिक पुलीस आनी RTO ऑफिसराचेर पडटा. पूण म्हाका दिसता ह्या स्किमीनसून न्हू खूब कितें करूंक शकता. आनी आयज इम्पॉर्टंट म्हणजे ऑफकोर्स हे आमचे वॉर्डन आयज येवपाक शकले ना कित्याक दे आर सिनियर सिटीजन. पूण जेन्ना ट्रॅफिक वॉर्डन स्कीम स्टार्ट जालें मेन आमचे कन्झ्युमर फोरमाचे वॉलंटियर जे चोडन माडेल हे पंचायत एरियान ते वॉर्डन जे रिटायर्ड टीचर हेडमिस्ट्रेस आनी रिटायर्ड लोक जे फेरी बोट जेटी दोनी सायडीन 1.5 वराचो आपले टायम दिवन काम केलें तेन्नासून आमकां एक उर्बा मेळ्ळें की बाबा ही स्कीम बरी आनी ही स्कीम वाडोवपाक जाय. सो आयज म्हाजो एकूच उलो आसा की जे लोकांक इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी लोकल ट्रॅफिक पुलीस सेल जाल्यार पुलीस स्टेशनाक कॉन्टेक्ट करून आपले एप्लिकेशन फॉर्म दिवचे आनी फक्त एप्लिकेशन फॉर्म न्हू ट्रेनींग घेवप नॉलेज मेळटलें. आनी येता त्या वर्सा ट्रेनींग वर्कशॉप आमी घेतले आनी तांकां मोटो व्हेहिकल एक्ट जे एमेंडमेंट येयलेले आसा खुबशे नवे कायदे येयले कन्झ्युमर प्रोटेक्शन एक्टाचे नॉलेज तांकां मेळटलें. आनी हितून म्हाका दिसता रोड सेफ्टी विशयाचेर बरोच इम्पॅक्ट जातलो हे आमकां खात्री आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हो जो प्रोग्राम जो जाला फेलिसिटेशन आनी वर्कशॉप ट्रॅफिक वॉर्डन आमचे ह्या 8th युनायटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी विकान जावपाक म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हेचो फायदो जातलो सगळे पंचायतीक म्युनिसिपालिटी. रोहन 131 days and 95 deaths जाले. हय सो मेजर डेथ्स आनी तितून 20 to 40 years तितून चड गॅपाचे लोक आसता चड इयराचे लोक आसता. सो कितें चुकता खंयसर? सर एक्चुली मेन इश्यू कितें आसा न्हू गाडी चलोवपाक इट इज नॉट अ रायट इट इज अ प्रिविलेज आनी ही प्रिविलेज बरे भशेन वापरूंक जाय. आतां तूं पळयत जाल्यार खूब एक्सिडंट आमी आतां एनालायज करता. एक वाटेन तो बरे भशेन चलयता पूण कितें आहा प्रॉब्लेम एक जॅम ताका सारकें पडोंक ना. दुसरें पळयत जाल्यार लेट नायट म्हणजे खंय तरी पार्टी गेलो तें जॅम सारकें ना. आतां दुसरें पळयत जाल्यार गरमीक लागून ते उदक सारकें पिवपाक जाय कीप युअर सेल्फ फ्रेश. तेच एडवायजरी सोड तूं तेच भायर तूं पळय जायते एक्सिडंट जे जाले मदीं एक ट्रक आहा आतां हे ऑब्स्टिकल जे आसा ना. सो हेजे सगळें एनालायज करपा जाय न्हू. हो जो ग्रूप आहा तांकां रिफ्रेशर कोर्स असो जावपा जाय. म्हणजे कितें आसा गाडी चलयता तें बरें आसा नवें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय. आज तुमी पळयत जाल्यार रेंट बायक रेंट कार अशें स्कीम आहा जायते ट्युरिस्ट भोंवता. तूं पळयत जाल्यार GPS कशें दाखयता गाडी चलयता पण दाखयता मोटरसायकल म्हणून आनी नो एंट्रीसून काल कासारवाणी जे एक्सिडंट जाले तूं पळयत जाल्यार नो एंट्री रॉंग सायडीचेर येता. सो ह्या सगळें जावपाक शकता म्हणून रायडरान आपलो लक्ष दवरपाक जाय. सी एज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन न्हू वी आर गेटींग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल कळ्ळें न्हू. सो तो चलयता तो सारको चलयतालो आनी सो डिफेन्सीव ड्रायवींग जावपा जाय. आनी ताका लागून आमचो एकूच विशय आज आमी तो परत पॉयंट मांडलेलो वी आर प्रोपोजींग फॉर रिफ्रेश कोर्स कंपल्सरी न्हू. तूं यो आपलें नॉलेज वाडय कित्याक आयज तूं पळय कितले लायटीचे पोल उडयले कळ्ळें न्हू. सो एक क्लियर दिसून येता. सो देर आर सर्टन टायप ऑफ एक्सिडंट वीच आर टेकिंग प्लेस. आनी जो प्रोडक्टीव एज म्हणून आयज आमी विशय घेतला की NCC NSS ग्राम सभे लेवलचेर आतां सगळे पंचायत म्युनिसिपालिटी की ह्या ग्रुपाक आमी कॉन्सन्ट्रेट करपा जाय. जे DGPन आयज क्लियरली सांगलेलें आसा की आज तुमी हॉलान पळयत जाल्यार एज ग्रूप जो आसा इट इज 45 एंड अबव जो हुस्को आहा रोड सेफ्टीक. पूण आयज आमकां ह्या हॉलान कोण आसपाक जाय कॉलेज स्टुडंट हायर सेकंडरी स्टुडंट. सो हे करतलो जाल्यार पियर प्रेशर बाबा एकामेकाक सांगपाचें सोशल मिडिया वापरून की बाबा तूं सेफ चलय फॅमिली. ताका लागून आमी 15 तारखेक ह्या मेच्या 15 तारखेक इट इज अ इंटरनॅशनल डे ऑफ फॅमिली तेजेर आमी विशय हायलायट करतलो. कितल्या लोकांक कितले फॅमिली डिस्ट्रॉय जाले. एकटो भुरगो जो कामाक लावपी आसा काम करपी आसा जोडपी आहा तो कामाक
सो हे सगळे म्हाका दिसता सामाजीक भितर हे हुस्को येवपाक हितून ते ब्लॅक स्पोर्ट्सूय रिस्पॉन्सिबल ना 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 ब्लॅक स्पॉट्स पळय ब्लॅक स्पॉट्स इज नॉट अ इशू एनीमोर तूं जर पळयत जाल्यार जे एक्सिडेंट डेटा काडीत पळयत न्हू आं इट इज नो मोर एनीमोर ऑफ ब्लॅक एका टायमार इट वॉज ओन्ली अबाउट ब्लॅक स्पॉट पण आतां जे एक्सिडेंट जाता न्हू इट इज अक्रॉस गोवा फॉर मल्टिपल डिफरंट रिजन्स आनी ताका लागून आमी दोनी रोड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीचेर आमी कित्याक एनालिसीस मागल्या की हे एनालिसीस पब्लिका मुखार घालपाक जाय आनी एनालिसीस पब्लिका मुखार घालतले तेन्ना लोकांक क्लियरली दिसून येतले की बाबा म्हाज्या गांवांनूय जाता आयज कितें हांवें डिनायल आमच्या गांवांत प्रॉब्लेम ना ओके सिंपल सांगता फ्रूट सेलर येयल्या हां सडनली तो ब्रेक मारता विकता सो फाटलो जो गाडी चलयता तेणें कितें करपाचें सो देफोर आमी कितें म्हणटा सगळ्यांनी इनवॉल्व जावपाक जाय एन्ड टू कन्क्लूड हांव कितें म्हणटा रोड सेफ्टी इज एवरीबडीज बिजनस फक्त ट्रॅफिक पुलीस फक्त ट्रॅफिक वॉर्डन न्हू एवरीबडी हॅज टू गेट इनवॉल्व आनी ताका लागून ह्या वर्सा आमचो असो प्रयत्न आसतलो ऑल गोवा लेवलाचेर हे इनवॉल्वमेंट करपाक